Good evening, interns. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Okay. Good evening, interns, seniors, and my fellow colleagues. Today we have a young and extraordinary associate, Miss Monica Singh, with us. She is having high expertise of drafting in district courts. She acquires good knowledge in civil, criminal, and family disputes. I would like to welcome Miss Monica Singh to speak on a topic for today. Over to you, Monica, ma'am. Thank you so much, Pragati, for this warm welcome. Good evening, intern. Good evening. Am I audible to you? Good evening, Yes, ma'am. ma'am. Good evening. Good evening. How are you all? I hope you all are doing good. Good evening, Anish, you are audible. Okay. So, before we start today's topic, let us know आप में से कितने लोगों ने अभी तक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पढ़ लिया है अपने करिकुलम में? You can raise your hand. Okay. तो कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा कि what do you understand by domestic violence basically? Anyone? Ma'am. Yes. Ma'am, as such, domestic violence act, मतलब नहीं पढ़ा, like family law में पढ़ा है, like it can be a ground of divorce on the basis of cruelty. Ma'am, like general meaning पता है, domestic violence is on the basis of physical, mentally, and sexually. Ma'am, like sexually, it could be like, as we know in India, like marital rape is not a rape, but husband can be tried on the basis of domestic violence, that he has sexually abused his wife. Very well explained. Anyone else? Thank you, लक्ष्य. अच्छा बताया आपने. Thank you, ma'am. और कोई बताना चाहेगा कि डीवी से आप डोमेस्टिक वायलेंस से समझते क्या है? मतलब what do you mean by domestic violence? किसके खिलाफ आप प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं अंडर डीवी एक्ट? आपको क्या लगता है कि मतलब डोमेस्टिक वायलेंस किसके साथ कमिट हो सकती है? कौन परपेट्रेटर हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? किस किस सर्कमस्टांसेस में आप कंप्लेंट इनिशिएट कर सकते हैं? इस एक्ट को कहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, किस तरीके से? एनीवन? ओके, so let's start with today's topic. I hope आप लोगों में से किसी को भी नहीं पता है, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे. Okay, chat box में when the husband refuses to maintain her wife, the court will. Yes. Anmol, you can unmute yourself. Excuse me, ma'am. Speak. Ma'am, Yes. can I answer? Yes, please. Ma'am, first of all, I have not studied the subject yet, and I am answering on the basis of personal knowledge only. So, domestic Okay, violence no is worries. any kind of physical or mental torture by a person on his or her spouse, and it's mostly used in the case of male spouse Okay. is harassing in some one way or the other the female spouse. Okay. So It is a in ground your for divorce answer as well. only we can get the act itself is like a protection of women from domestic violence act. Act का नाम ही यही है, protection of women from domestic violence act. So nevertheless, men cannot go under this legislation if they are the victim of any kind of thing, right? So starting from the commencement of the act, 26 October 2006 में domestic violence act right came into force. And let me clear you one thing. It has nothing to do with the marriage concept, right? It is not the condition that the person who is initiating the complaint should be married to a particular person. Like relationship of husband and wife is not the criteria under domestic violence act. It can be any female, कोई भी महिला जिसके साथ किसी भी तरीके का violence हो रहा है, उसको physically, mentally, it can be economically as well. Right, she is not getting maintained by her husband or any person who is under the liability to maintain her, right? So it can be initiated by anyone. I hope I'm clear to everyone and I'm audible as well. Yes, ma'am. Okay.
तो जो एक्ट है वो 26 अक्टूबर 2006 में आया था। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो उसके अंडर ये लेजिस्लेशन फॉल करता है। एंड सबसे पहले अब हम डेफिनेशन क्लॉज, बेयर एक्ट तो सभी पढ़ लेते हैं, राइट? आप लोग पढ़ लोगे डेफिनेशन क्लॉज। मैं आपको सिर्फ वो बताना चाहती हूँ प्रैक्टिकली क्या चीजें एप्लीकेबल होती है। जैसे कि लक्ष्य ने बताया कि हस्बैंड अगर किसी तरीके से क्रूएलिटी कर रहा है, यस इट कैन बी अ ग्राउंड फॉर डाइवोर्स इफ द वाइफ इज सब्जेक्टिंग टू क्रूएलिटी बाय हर हस्बैंड और रिलेटिव। But marriage wala concept is not necessary, not important. Any unmarried woman can also initiate legislation under DV Act. So it is basically protecting the women from any kind of violence. Okay. Let me share my screen for further clarification of the topic. I would like to share. So is my screen visible to you all? Yes or no, maybe? No, ma'am. No, ma'am. Okay. Just give me a minute. So now can you all see my screen? अब दिख रही है आपको स्क्रीन अपने उसमें? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So let's quickly discuss some main ingredients basically कि कौन-कौन सी चीजें हैं which falls under the domestic violence. Okay. Just let me show you that. So this is domestic violence rules. Okay. इसमें कैटेगरीज नीचे डिफाइन की हुई है कि कौन कौन सी वायलेंस है, किस किस तरीके की वायलेंस जो है वो परपेट्रेटर इंफ्लिक्ट कर सकता है अपॉन दी एग्रीव्ड पर्सन. So here as you can see here, the very first category of this is sexual violence, right? So it can be like forced sexual intercourse, or the person is trying to show you some kind of pornography or any kind of obscene sexual thing, or humiliating or degrading the victim in any manner. So these are all the ingredients of sexual intercourse, right? Sexual violence basically. Then dowry related harassment is there. Any kind of harassment related to dowry is also being covered under this. लाइक अगर किस तरीके से डिमांड हो रही है डाउरी की, किसी डाउरी डिमांड कर रहा है, जो पर्सन है इज डिमांडिंग डाउरी फ्रॉम दी पर्सन, और ये सारी चीजें, ठीक है. उसके बाद आता है इकोनॉमिकल वायलेंस, नॉट प्रोवाइडिंग मनी फॉर मेंटेनिंग यू और योर चिल्ड्रन, नॉट प्रोवाइडिंग फूड, क्लोथ्स, मेडिसिन एक्सेट्रा फॉर योर चिल्ड्रन, फोर्सिंग यू आउट ऑफ द हाउस यू लिव इन, मतलब आपको घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपका जो राइट टू शेल्टर है उसको ब्रीच किया जा रहा है. वर्बल और इकोनॉमिक इमोशनल अब्यूज की बात करते हैं तो इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी डिमीनिंग, ह्यूमिलिएटिंग और अंडरमाइनिंग स्टेटमेंट, or any kind of thing like forcing you not to attend college or educational institute. किसी भी तरीके से हो सकता है. it doesn't matter कि वो सिर्फ फिजिकली ही होना चाहिए. आपको किसी तरीके की फिजिकल ही अगर आपको इंजरी इन्फ्लिक्ट की जा रही है तो वही नहीं वायलेंस में क्रिएट होता. बहुत सारी चीजें हैं जो उसमें इंक्लूड की जा सकती है. लाइक the parents sometimes force you to get married to a particular person, right? So in that case also it amounts to DV only. So DV is basically a kind of thing where the perpetrator and the complainant live under the same roof, thereby inflicting any kind of so violence. It can be emotional, it can be verbal, it can be anything like name calling. It's very like common thing. People call you by names. I hope you all understand the meaning of name calling, right? So all these Yes, things ma'am. are being covered under. Okay. So moving forward, let's come to the complaint, format of complaint basically. So can you see over your screen there is one kind of graph I'm sharing with you people for your reference. So कंप्लेन डीवी एक्ट में कौन से सेक्शन में इनिशिएट की जाती है? सेक्शन 12 जो है वो Ma'am, it is not empower visible. करता है. Ma'am, it is not visible.
Okay, I'm facing some difficulty in it. Just give me a moment. Give me a moment. Okay, let me try it from my phone itself. यहाँ पे तो हो नहीं रहा है. Just give me a moment. I'll be sharing it. Okay, so can you all see my screen now? Yes. Ma'am. Yes. Okay. Yes. So here you can see it addresses as in the Court of Chief Metropolitan Magistrate. Right, like magistrate has the power to try this. The Act itself define the power of magistrate to try the matters in DV Act. So application under section 12 of the protection. सबसे पहले जो आप पहले भी आपको फॉर्मेट दिखाए गए जिसमें सारी चीजें मेंशन की जाती है इन द कोर्ट ऑफ सो एंड सो मैजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट का नाम देन उसके बाद कंप्लेनेंट देन रिस्पोंडेंट फिर इन द मैटर ऑफ एंड ऑल द डिटेल्स ऑफ कंप्लेनेंट एज वेल एज रिस्पोंडेंट then application or complaint under section 12 of the protection of women from domestic violence act 2005 उसके बाद जो भी आपके फैक्ट और सर्कमस्टांसेस हैं वो सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे ब्रीफ फैक्ट आप जो भी मेंशन करेंगे जहां जहां डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स जो हैं वो हुए हैं वो सारी चीजें आप पॉइंट वाइज इसमें मेंशन करेंगे राइट मोनिका लिटिल स्लो. सारे ओके तो सारी मतलब ये आपको सबसे पहले एप्लीकेशन दैट एप्लीकेशन इज बीइंग मूव बाय द कंप्लेनेंट दैट इज एग्रीव्ड पर्सन अगेंस्ट किसके किसके अगेंस्ट आप इनिशिएट कर रहे हैं लाइक रिस्पोंडेंट नंबर 1 इज द हस्बैंड इन द प्रेजेंट केस देन रिस्पोंडेंट नंबर 2 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ ठीक है देन उसके बाद आप सारे अपने ब्रीफ फैक्ट की डे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें कंप्लेन में हमें ध्यान रखनी होती है दैट इज द डेट ऑफ इंसिडेंट so that any protection officer when he's being authorized to investigate in this particular matter he or she can relate that thing and collect evidence accordingly right like in this particular case 29/10/2009 is the first date when any kind of DV or cruelty any kind of act of cruelty has been committed so it is being mentioned in this manner तो सबसे पहले अगर मैरिज हो रखी है लाइक द कपल आर मैरिड एंड यू आर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग अगेंस्ट योर हस्बैंड देन यू नीड टू एस्टैब्लिश द मैरिज आल्सो कि क्या कब हुई शादी क्या क्या चीजें उसमें इन्वॉल्व थी किस किस तरीके से उसमें आपने खर्चा किया है क्या है किस तरीके की मैरिज थी एंड ऑल दैट सब ठीक है उसके बाद फिर आपको जितनी भी डीवी के जो इंसिडेंट्स है वो सब आपको मेंशन करने हैं जैसे इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में आपको दिख रहा है ठीक है उसके बाद हम आते हैं प्रेयर क्लॉज पे प्रेयर क्लॉज से पहले भी 2-3 लाइन्स हैं विच आर द मैंडेटरी पैराग्राफ लाइक इन दिस पर्टिकुलर ड्राफ्ट यू कैन सी पैरा नंबर 21 that be aggrieved by all the torture inflicted upon her mental as well as physical whatever type sort of cruelty or domestic violence has been created has been committed against you you have to mention all those and then you are stating this mandatory paragraph कि complainant क्यों initiate कर रही है इस particular proceeding को just because she has undergone all these cruelties over the certain period of time by the perpetrator so that is why she is
moving this complaint. So complainant only wants to live it peacefully in matrimonial home. फिर सारी चीजें कि हाँ वो peacefully रहना चाहती है, उसकी basic necessities पूरी की जाए और ये सारी चीजें. फिर उसके बाद in the light of above said fact circumstances, फिर complainant के पास कोई और option ही नहीं है. She is constrained to file this present complaint against the respondent before this honorable court for seeking justice and proper legal remedy. So talking about legal remedies, in this particular act, there is no punitive punishment kind of thing is not there. So if any kind of proceeding is being initiated in this DV Act, punishment kahin pe bhi clause nahi hai pure DV Act mein. But yes, if the order or decree has been passed in your favor by like you have filed the complaint, all the things is being done, respond like your evidence, respondent's evidence, then final argument and decree has been passed by the court, whether in the favor of complainant or the perpetrator or the respondent here in this case, right? So the only remedy the court gives is like protection orders under different sections, which is being mentioned in DV Act itself, like protection order under section 18, whereby the complainant is saying for granting injunction against the respondent from creating or repeating any kind of violence against the complainant in future. So here the prayer reads as prohibiting acts of domestic violence by granting an injunction against the respondent from repeating any act. So prayer read out as under sections, different sections. Whatever your prayer can be, it can be residence order, it can be any kind of thing. So prohibiting from installing recording, उसकी privacy breach ना हो. जिस भी तरीके के आपके जो भी client आपके पास आते हैं, उनकी क्या requirement है, you will hear and listen and then draft accordingly. So in this particular case, she is demanding protection orders as well as residence order also under section 19 of DV Act itself. जिसमें वो ये चीजें बोल रही है कि जो भी property है in which she is living or she is entitled to be to live there should not be alienated, should not be created any third party interest, and so on and so forth is the prayer. Then monetary relations, the third thing which is being prayed in this particular draft कि let us suppose कि husband जो है वो इस तरीके की उनको चीजें कर रहे हैं कि he is not maintaining her और child है कोई तो उसको भी वो maintain नहीं कर रहा, तो that also amount to cruelty under DV Act. तो उसके लिए भी यहाँ पे prayer है अलग से कि she is demanding this much amount per month for all these things like day to day necessities जो भी उसकी fulfill नहीं हो रही है. Then compensation order जो भी उनको mental emotional torture और distress अभी तक हुआ है उसको monetary उसमें although it can't be calculated in monetary terms but yes to some extent we can calculate कि अभी तक मतलब 4-5 साल शादी को हो गए या 1 साल हो गए उतने टाइम पीरियड में जो भी उन्होंने इंजरीज और मेंटल टॉर्चर कहा है उसके अगेंस्ट एक तरीके से आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं अंडर सेक्शन 22. देन लास्ट फिफ्थ पैराग्राफ ऑफ प्रेयर रेड्स आउट एज pass any other order this honorable court deem fit in the circumstances of the case in the interest of justice basically. So am I clear till now everyone? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now coming to the affidavit part of this. So affidavit under the complaint of DV is being filed under section 23 clause 2 of the protection of women from domestic violence act. When you will read, I'll show you clause 23 का clause 2 क्या बोलता है. अभी आप सिर्फ ये draft देखिए, फिर I'll come to the bare language also, bare act also. Okay. So here we mention all the facts of the case in brief gist, so that we can get it notarized by the oath commissioner. Any kind of document which we file, any kind of affidavit, any kind of complaint we file in the court, it has to be corroborated with the affidavit, supporting affidavit which is being like attested by a oath commissioner. Oath commissioner is the official thing which court appoints, official kind of authority which make you sworn the things like एक तरीके से शपथ है कि आप जो भी चीजें इसमें मेंशन कर रहे हैं वो सारी चीजें बिल्कुल ट्रू हैं, करेक्ट हैं और उसको अफर्म करा के देन ओनली यू फाइल इन दी कोर्ट. So any kind of complaint without this affidavit is not maintainable. The court will reject the petition, reject your complaint if you are not giving this affidavit supporting your complaint. So in this particular affidavit, you need to mention all the facts again in brief gist only. Then dependent verification whatsoever is the thing will be done. Then coming to section 23. What does section 23 of DV Act talks about?
basically when any person initiates any kind of complaint, so it we all know कि our legal procedure is bit slow meaning burden ज़्यादा है. Basically हमारी judiciary जो है वो overburden है. So meanwhile जब तक ये petition पूरी decide हो, it's a long process. तो जस्ट बिकॉज कि कंप्लेनेंट को कुछ इजी रेमेडी कुछ मतलब जो उनको चाहिए वो चीजें स्टार्टिंग में ही कुछ जो कोर्ट डिसाइड कर दे, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन हम साथ में सपोर्टिंग मूव करते हैं अंडर सेक्शन 23 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट. इस पर्टिकुलर सेक्शन में इट टॉक्स अबाउट ग्रांट ऑफ एनी इंटरिम और एक्स पार्टे ऑर्डर. मतलब हम इसमें प्रे करते हैं कि कोई भी इंटरिम मीन्स वेरी इनिशियल स्टेज विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी statements, without any kind of going into the complaint thing, without any cognizance stage. हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले कोर्ट को प्रे करते हैं कि कुछ ऐसा वो एक अमाउंट जो भी हमारी प्रेयर है उसके अकॉर्डिंग कुछ एक ऐसा अमाउंट डिसाइड करके कंप्लेनेंट को फिलहाल के लिए, ताकि उनको उनकी लाइफ जो है वो इजी गोइंग हो जाए, जस्ट बिकॉज शी इज बीइंग सब्जेक्टेड टू क्रूएलिटी एंड अदर काइंड ऑफ थिंग बाय द परपेट्रेटर. तो उनको एक लाइफ को इजी बनाने के लिए कोर्ट से हम एक इंटरिम वो मांगते हैं कि इंटरिम रिलीफ मीनवाइल हमें कुछ दे दिया जाए, जो कि स्टार्टिंग 1 या 2 डेज में ही आपको कंप्लेंट जब आपकी रजिस्टर आप फाइल कर देते हैं और वो लगती है जज के सामने फॉर अपेयरेंस, तो यू आर्ग्यू ऑन दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. सो इट इज टोटली डिस्क्रिशनरी. इफ यू वांट कि आपको इनिशियली कुछ एक कॉम्पनसेशन कुछ एक आपको रिलीफ मिलना चाहिए, सीइंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यू कैन मूव दिस एप्लीकेशन. So herein also all the facts and the things which has been committed by the perpetrator against the complainant will be mentioned in the same manner, but need not to repeat all the facts again. But yeah, a gist of it कि complainant जो है वो strong prima facie case के साथ कोर्ट के सामने आई है, उनकी जो complaint है वो maintainable है, तो वो इस तरीके से प्रे कर रही हैं. फिर अगेन वही सारी चीजें जो हमारी इनिशियल कंप्लेंट मेन जो सेक्शन 12 की कंप्लेंट थी जिसमें हमने सारी चीजें मांगी थी, वही सेम चीजें हम यहाँ पर भी प्रेयर क्लॉज में दोबारा से प्रे करते हैं कि इंटरिम कोर्ट ऑर्डर कर दे जब तक प्रोसीडिंग चल रही है कि हमें ये रिलीफ मतलब इंटरिम वो कर. ठीक है, तो इसमें भी सेम सारी वही चीजें आती हैं. तो इट इज टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द कंप्लेंट. जब तक कंप्लेंट फाइनल डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती है, चाहे वो कंप्लेनेंट के फेवर में हो चाहे वो रिस्पॉन्डेंट के फेवर में हो, तो दोनों में से जब भी वो डिसाइड नहीं होता तब तक ये इंटरिम ऑर्डर जो भी अगर कोर्ट पास करती है तो दैट इज मेंटेनेबल टिल द टाइम ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ द कंप्लेंट. Okay, so now again this particular section 23 application is being supported by an affidavit itself. वही सेम सारी चीजें इसमें भी आती हैं. ब्रीफ फैक्ट्स आप मेंशन करते हैं और इट नीड्स टू बी नोटराइज्ड बाय अ ओथ कमिश्नर, सॉरी बीइंग अटेस्टेड बाय अ ओथ कमिश्नर. नोटराइज्ड बाय नोटरी. अगर आप कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं तो आप ओथ कमिश्नर से ही अटेस्ट करके उसको फाइल करते हैं, देन ओनली योर कंप्लेंट इज मेंटेन्ड. Then again this is the same format, like again this is the other format of same kind. Parties are different and these all are created for this internship purpose only. आपको दिखाने के लिए ये ड्राफ्ट बनाया है. It's all hypothetical you can see. Okay, so any questions till now? Anyone? Before we move further, किसी के कोई questions हैं तो you can Ma'am, ask. there are certain questions in the chat box. Okay, I'll refer them. अभी मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ. I need to explain more things. Oh, okay. मैं जनरली पूछूं जो मैंने बताया उसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है तो you can ask. Then I'll move forward and obviously I'll refer this chat box as well. We'll keep that last section. Yeah. Ma'am, what is PCR, MCR, which was referred in that documents? PCR or NCR? NCR is non-cognizable report and PCR, where you have seen that? I'm not sure. In that application before the affidavit one which you displayed. Okay, just let me check once. Let me check. Okay, ma'am. Can you show me where PCR and all things you have seen? Can you tell me which paragraph Yes. maybe? I'm just scrolling it down in the initial pages itself or in the middle of the complaint somewhere. In the middle of the complaint, ma'am, somewhere I saw. Okay. Just let me go through it. If I can find the words, we'll definitely tell you. But I don't think we have used that thing or terminology anywhere. So let me check. If you see somewhere, please let me know. PCR came and took the
पीसीआर इज लाइक पुलिस, जब आप पीसीआर कॉल करते हैं ना, जो आप बोलते हैं कि मतलब 100 नंबर कॉल कर दिया तो पीसीआर आ गई पुलिस के। सर, एक्सक्यूज मी सर, आई वुड लाइक टू Police प्लीज control एनलाइटन room. दिस। PCR is police control room. या पुलिस कंट्रोल रूम, आप जो पीसीआर कॉल करते हैं वही, मतलब आप डोमेस्टिक इंसिडेंट्स अपनी जितने भी आपके जो वो हैं इंसिडेंट्स हैं उनको कोलैबोरेट करने के लिए ऑब्वियसली यू हैव टू मेक योर कंप्लेंट स्ट्रॉन्ग बाय पुटिंग ऑल दीज पॉइंट्स लाइक पीसीआर। इस तरीके की आपको उन्होंने क्रुएलिटी के लिए सब्जेक्ट किया कि आपको पीसीआर तक कॉल करनी पड़ी इन दिस पर्टिकुलर कंप्लेंट। यही हम दिखाना चाह रहे हैं कि 100 नंबर की कॉल हुई और पुलिस कंट्रोल रूम से फिर एक्शन लिया गया, तो वो भी एक वो पर्टिकुलर डेट थी। तो जब वो होगा, ये कोर्ट में एविडेंस के स्टेज पे आएगा, तो उनके फेवर में जो कंप्लेनेंट है उनके फेवर में केस ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग होगा। और पुलिस ने एनसीआर क्यों रजिस्टर करी? क्योंकि उसमें कॉग्निजेंस नहीं ली जा सकती थी। तो जो ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जहाँ पे पुलिस वाले, आपको पढ़ाया गया था कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, राइट? तो जहाँ पे कॉग्निजेंस लेने की जिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ आईपीसी में पुलिस को अथॉरिटी नहीं है टू टेक दी कॉग्निजेंस, so they file the complaint, your complaint under the NCR, non-cognizable report. So 323 and 506 are like that section only, जहाँ पे NCR जो है वो होती है। आपने सुना होगा normally FIR and NCR, there are two different kind of things which run simultaneously, right dear? Yes, ma'am. And what is MLC? It's medico-legal cases. मैंने अपने चार्जशीट वाले सेशन में भी आई गेस इस पे काफी हमारा डिस्कशन हुआ था। आई डोंट नो यू वर देयर और नॉट, मैं रिपीट कर देती हूँ। एमएलसी बेसिकली होता है जब आप इस तरीके की फिजिकल इंजरी पे आपको सब्जेक्ट किया जाता है। लेट अस सपोज कि मतलब कंप्लेनेंट आपके पास आती है, उनके साथ किसी तरीके से, सॉरी हाँ मैं बताती हूँ, एमएलसी इज मेडिको लीगल सेट, सॉरी आई डिडंट गेट, हेलो am I audible? Go a bit slow. Okay. MLC is basically medico-legal certificate. It is being issued by a authorized doctor of a government hospital as per the act. ये होता है जब किसी भी तरीके की फिजिकल इंजरी जो है वो इन्फ्लिक्ट की जाती है अपॉन द कंप्लेनेंट, whosoever is filing the complaint is being subjected to cruelty of such a kind which involved physical injury, then MLC needs to be conducted. So it is being conducted by a registered medical practitioner of a government hospital. तो वो एमएलसी वाला पॉइंट यहाँ पे डाला है कि पुलिस ने वहाँ पे जिस तरीके की मतलब उनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ होगा उसमें उनको चोट आई, वो हॉस्पिटल गई, पुलिस पीसीआर आई, उनको हॉस्पिटल लेकर के गई, एमएलसी कंडक्ट की गई, तो वो भी इसमें आप अटैच कर सकते हैं टू मेक योर केस स्ट्रॉन्ग कि हाँ इस तरीके से डोमेस्टिक वायलेंस के इंसिडेंट्स जो है वो होते रहे हैं हमारे साथ कंप्लेनेंट के साथ, और उन्होंने साथ में ये सारी चीजें भी अटैच की। आई होप आई एम क्लियर। Yes, ma'am. Thank you. Ma'am, यस you use the word in starting preparators and dash lives in the same roof. Can you repeat that word? Perpetrator basically is a person who is being what do you say, just because this is a complaint so we say respondent, right? Any person who respondent can be 1 2 3 any number any kind of person who is living with the complainant। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। जैसे मैंने कहा था कि शादी is not the mandate thing for this particular act to come into picture, right? So any person, it can be any person, it can be your own father, your father-in-law, your mother-in-law, any female who is living with any male under the same roof. Basically, that was the concept. What is domestic relation? Yes. Perpetrator basically means a respondent who is suffering the cruelty. Who is inflicting the cruelty? Basically, respondent who is inflicting the cruelty in whatsoever manner. It can be physical, verbal, economical, as I have told you, right? Okay. Yeah. So, any more questions by anyone? मैम Yes. मैम वो नेम कॉलिंग वाला कौन सा पॉइंट था? आपने बताया था ना कुछ अभी नेम कॉलिंग के बारे में। So it's a verbal abuse. Basically, it comes under the category of verbal abuse. ओके मैम, ओके। तो मतलब उसमें होता क्या है मैम? वो समझ में वो नहीं आया। आपको वो समझ नहीं आया? Name calling can be anything. Like it can be body shaming. It can be racist remarks. It can be anything. Like
you demean the other person in any manner. Okay, ma'am. Be it Okay, about clear. body structure or any kind of thing, right? Okay, ma'am. Yeah. So it comes under the definition of domestic violence. Okay. So coming about to the topic which I was talking earlier, कि ये जो एक्ट है वो किसी तरीके की प्यूनिटिव पनिशमेंट के बारे में नहीं बात करता है. मतलब इस एक्ट में आप रिलीफ सॉर्ट कर सकते हैं, रेजिडेंस के अलग अलग तरीके के हैं, मॉनिटरी भी आप कर सकते हैं. आपको और कोई अगर मतलब इसमें आप मेंटेनेंस इसमें आप अपना कुछ मंथली एक्सपेंस जो है वो भी आप ले सकते हैं अंडर सेक्शन 23 जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप इंटरिम ऑर्डर्स भी अपने लिए पास करवा सकते हैं टिल द टाइम. बट इसमें कहीं पे भी एक्ट में पनिशमेंट इज नॉट डिफाइंड. ओके, एम आई क्लियर टू यू ऑल कि पनिशमेंट कहीं पे भी नहीं है, पूरे एक्ट में पनिशमेंट इज नॉट देयर. बट इफ वी टॉक अबाउट सेक्शन 29, लेट मी शेयर सेक्शन 29. व्हाट डज इट टॉक अबाउट? जस्ट गिव मी अ मिनट. I'm facing some difficulty today in sharing my screen. Sorry for the inconvenience. Just give me a minute. Huh? Can you all see section 29 over your screen? Yes, ma'am. Okay. So it talks about appeal. So when any kind of order is being, any kind of decree is being passed by the honorable court against the person, it may be in favor of the complainant, it may be in against the complainant, right? It may be in favor of complainant or respondent, whatever the case may be. The appeal shall lie to the court of session. Just because we are referring this particular complaint under metropolitan magistrate, like CMM, we are addressing this complaint to CMM, right? So any kind of order being passed by the London Metropolitan Magistrate shall be appealable to the court of session within 30 days. Okay. From the date on which the order was made, the final decree was made, the party whosoever wants to go in the appeal have the time period of 30 days from which the date the order made by the magistrate is served on the aggrieved person or the respondent, as the case, whatever the case may. तो अगर इसमें कोई भी ऑर्डर आपके लिए पास होता है, आपको लगता है कि वो आप यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट पर्टिकुलर ऑर्डर, so you can go in appeal. And what I was talking about is section 30, जिसमें ये बोलते हैं, मैं section 30 भी शेयर कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं समझाती हूँ कि what I was trying to say. Section 30. So here, can you all see section 30 over here? Yes, ma'am. Section 30 talks about protection officer and member of service provided to public. The protection officer while acting or purporting to shall be deemed to be appeal. जो punitive वाला वो एक सेकंड
सॉरी was talking about section 31 जो कि बात करता है penalty for breach of protection order by respondent. Let us suppose कोई ऐसी डिक्री हुई है जिसमें कि कंप्लेनेंट के फेवर में ऑर्डर हुआ है, राइट? कंप्लेनेंट ने जो भी प्रेयर की थी, रेजिडेंस ऑर्डर और कॉम्पनसेटरी ऑर्डर, जो भी चीजें उन्होंने मांगी थी अपने प्रेयर में, उनको वो चीज ग्रांट हुई है बाय द ऑनरेबल कोर्ट. डिक्री जो है वो कंप्लेनेंट के फेवर में है, और इन दैट पर्टिकुलर केस अगर जो ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर का किसी भी तरीके का ब्रीच होता है, तो उस पर्टिकुलर केस में जहाँ पर सेक्शन 31 जो है वो इट comes into picture and talks about that it shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year or with fine. As I was talking कि इसमें कोई particularly वैसे मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट में मतलब कोई punitive वो नहीं देते हैं ऑर्डर, बट लेकिन अगर पर्टिकुलर ऑर्डर का ब्रीच होता है then you can apply for an application for like contempt कि ऑर्डर जो है वो it is not being it is not being complied by the other party. तो आप उसमें ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर आप पेनल्टी के लिए एक एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि रिस्पोंडेंट इज नॉट कंप्लाइंग विद द व्हाटसोएवर हैज कोर्ट हैज ऑर्डर्ड फॉर हिम टू डू. So it can punishment can be given by the magistrate in the circumstances. It can be 1 year or with fine, और 20,000 rupees तक का फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों ही चीजें हो सकती है. ओके, so with this I am done with this session. Any question, any kind of query you can ask. Yes. Ma'am, is there any limitation period for filing the complaint under this act? Yes, section 29, that is appeal, talks about this, and the limitation period for this is 30 days from the date of the order. No. I'm asking, for example, if a girl child who is below the age of 18 years, if she has faced any such domestic violence incident and later on after attaining 18 years or even after a few years, can she file the complaint under this act? Yes, obviously she can file, or any person on her behalf can file. Like if she is below the 18 years of age, so any person who is like legally can represent her can file the case. There is no such bar of age in this particular act. Any female who is subjected to cruelty can go in this act for remedy. So there is no limitation period. Like if she has faced the domestic violence at the age of 12, she can file the complaint later on after 30 years or. Yes, the act itself talks about, the act itself talks about the same. It says as the aggrieved party at any point of time has lived with the perpetrator under the same roof or under domestic relationship. So it can be filed later on also. But the subject, like the things which should be kept in mind is you have the relevant proof to show that cruelty or domestic violence has been inflicted upon. Okay, ma'am. Thank you. All right. Yeah. Any other questions, or shall I refer to the chat box? There are questions in the chat box. Yes, Pragati. Yes. Can you please? No, I can see there. I'll read it and answer it. Ma'am, the first question is, if husband is talking online with someone about his wife in an inappropriate manner and wife finds out, can she file it under domestic violence? Inappropriate as in like, I'm not clear with the question. Sir, would like you to answer this, please. But I'm also not clear about this question because the word used inappropriate manner. What does it mean? Yes. It can be anything. Sir, I was asking that since we have now an internet boom and people are actually living their fantasies somewhere else. Suppose a husband is talking with a person, talking about how he wants her to have sexual intercourse with many men or something like that, or then if she finds out, suppose she
sees the chat, then can she files domestic violence because she would not feel safe with him living with under same roof. See, And domestic violence complaint can be filed only against the offences which are prescribed under the Domestic Violence Act. First. Second, whether she can file it under DV. She can file it under DV, but how will she can prove it? Because filing of complaint, you have to prove it also before the court. Otherwise, also such kind of a conduct on the part of husband can create a cruelty, which she can ask for the divorce or she can ask for the compensation. Okay, sir. Okay, next question. The next question is, what about eve teasing? What about eve teasing? Eve teasing has nothing to do with the domestic violence complaint, because the basic ingredient of domestic violence complaint is because parties has to live under the same roof. Right. And the next question is, could you please explain the difference between interim and ex parte order? Okay, so interim order is any kind of order which is being passed at the initial stage of the filing of your complaint. Like it is being passed stating some relief, some initial relief, we can say. And ex parte is altogether a different concept whereby any of the party is not able to produce himself or herself before the court. Like upon different kind of services being served upon him, like registered post se bhi ho gaya, WhatsApp bhi kar diya, mail bhi kar diya. Then also we are not able, the court is not able to serve him or her. Then ex parte order is being passed in the favor of one person who is appearing. It can be in the favor of either party, but ex parte is in the absence of one party, and interim order is any kind of relief order, any kind of initial relief being granted to the complaint. Hope I am clear. Okay, the next question is Domestic Violence Act simultaneously read with Section 498 of IPC? Okay, so answering this question, I was sharing screen regarding Section 31. So let me read it out once again for the one who has asked this question. Sir, would you like to answer this question? To see what is the question. Sir, he or she is asking whether it can be read simultaneously with Section 498A of IPC. See, बड़ा tricky सा, yes, बड़ा tricky सा answer है इसका, बहुत डिटेल में जाना पड़ेगा इसके लिए. Initially, domestic violence complaint and this cruelty complaint under Section 498 is totally different, because जो domestic violence की complaint है उसके लिए judge has to take a cognizance, and 498 a complaint is a pre-cognizance stage. दोनों ही अलग हैं, और अगर एक साथ अलग-अलग चलते भी हैं, allegations पे भी depend करता है. Sometimes parties are confused. वो दोनों जो भी allegations वो लगाती हैं वो cruelty में भी fall करता है, domestic violence में भी fall करता है. तो it's up to the lawyer कि वो कैसे उसको defend कर रहा है. अगर एक ही चीज के लिए दो जगह पे आपको पनिशमेंट दी जा रही है, अगर मैं एक्यूज की तरफ से बोलूं तो ऑब्वियसली इट इज इलीगल आल्सो एंड अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो. बट अगर मैं कंप्लेनेंट की तरफ से बोलूं इट इज अ गुड इनफ कि अच्छा है, दोनों तरफ पनिशमेंट मिल रही है. And in other case, double jeopardy can't be done, na? So yes, can't be done. Or it can't be done simultaneously. Yes, right, sir. Thank you so much, sir. Next question, please. Excuse me, ma'am. Yes, please. Like if a person approaches under Section 498A, then the remedy would be a punishment, while if he goes under Domestic Violence Act, then it would be more of a compensation. Is it so? Like, yeah. Yes, exactly. Obviously, yes, exactly. You have got it right. So it depends what the complainant
is asking for. If any client, any complainant comes to you, you'll obviously ask कि आप चाहते क्या हो. Basically आप जो आपके perpetrator हैं, जो accused हैं basically, जो respondents हैं, जिन्होंने ये सारी चीजें आपके साथ की हैं over the period of time, उनको आप punishment दिलवाना चाहते हैं या आप compensation लेकर के ही settle करना चाहते हैं. तो that totally depends कि advocate को आप किस तरीके की चीजें जो है वो आप बोलते हैं और वो किस तरीके से present करते हैं. So दोनों ही Yes, चीजें ma'am. option हैं in If that. we see that in family law, as we have learned that the cruelty also includes mental cruelty, and it has the definition has been quite defined with judicial decisions. And in the definition given in 498A is very much related to physical cruelty. So if it is a case of mental cruelty, then can we approach domestic violence act? Yes, yes. Very right, very right. वही ऑप्शन है एक्चुअली. यू आर वेरी राइट. 498 में टॉक अबाउट फिजिकल इंजरी. हम ऑब्वियसली फिजिकल क्रुएलिटी के बारे में बात कर रहे हैं. इन डीवी एक्ट all the things are being covered, mental, physical, economical, verbal, sexual, all things are being covered. So you have to see कि आप कहाँ पे benefit जो है वो कहाँ पे आप basically justice जो है वो सर्व कर पाते हैं अपने क्लाइंट को. So you have to see that. Being an advocate, it's your duty कि आप किस तरीके से उसको किस लेजिस्लेशन में जा करके उनको बेटर रिलीफ दिला पाते हैं. राइट. टोटली डिस्क्रिशनरी. इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हो कि बिकॉज सेक्शन 498 is specifically for husband and relative of husband. It is only against the husband and relatives of husband. एंड डीवी एक्ट में आप किसी के भी अगेंस्ट जा सकते हैं जिसके साथ भी आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप शेयर कर. राइट. एनी अदर क्वेश्चन? मैम गुड इवनिंग. यस, गुड इवनिंग. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे अगर कोई अथॉरिटी वाला पर्सन है, जैसे एसआई है, अगर एसआई डोमेस्टिक वायलेंस करता है अपने घर में, तो उसके ऊपर कैसे एक्शन लिया जाएगा? मतलब कैसे? सेम मैनर एवरीबॉडी इज इक्वल बिफोर लॉ. तो मैम जो उनकी जगह कोई उनका फैमिली का जैसे लेडी है, उनकी फैमिली का कोई करेगा या उनका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या पड़ोसी? डोमेस्टिक वायलेंस में ऑब्वियसली कंप्लेनेंट जो है वो आपका जो आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल करते हो, उसका कंप्लेनेंट नीड्स टू बी दी पर्सन हु इज बीइंग इन्फ्लिक्टेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग. राइट. तो कोई और बिहाफ पे करता है तो यू नीड टू गो इनटू ऑल दैट पावर ऑफ अटॉर्नी, जनरल पावर ऑफ स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी नीड्स टू बी देयर. आप किसी को असाइन करते हैं अपने बेसिस पे कि मैं नहीं कर सकती कंटेस्ट, आप मेरे बेसिस पे करिए. तो यस, यू नीड टू अटैच दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड. नेम डिस्क्लोज नहीं होना है, ऐसा कुछ आपका कंसेप्ट है? इफ आई एम गेटिंग यू राइट. ओके मैम, थैंक यू. व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस? क्लियर? यस मैम, क्लियर. Okay. Next question. Do we have any other question in chat box? I guess. Yes, ma'am. There is a question in the chat box. If in a situation there are two cousins who live under the same roof and one of them keep bullying the other at school or some other place, then would this situation come under domestic violence? Okay, so who has asked this question? Can you unmute yourself or Vigya, right? So you need to specify here cousins being of what gender? He or she, मतलब वो मेल है, फीमेल है, कौन है? The two cousins question is not clear in itself. It's very ambiguous question. If the two cousins are male, then obviously they can't under this legislation. They can go for any other remedy available in our other legislation, but not under DV Act. And if one of the cousin is like female and the person who is doing that thing, they are female. Both are female. Okay, so obviously they can go under this legislation. जा सकते हैं. Ma'am? Yes. Ma'am, in this domestic violence act, the perpetrator have to be male or it can be female also? It can be female also. Yes, this point was missed out. मैं इसको cover करने वाली थी. Actually, thank you for asking, Lakshya. It can be female as well. Like in recent one of our cases only, there is a complaint being initiated by mother-in-law against her daughter-in-law.
Okay, so it can be initiated against female act. So herein respondent can also be female. But the main condition is that the complainant should be female only. Male can't go for any kind of remedy under domestic violence. Okay, Lakshya? Lakshya. Okay, ma'am. मैम इसमें Yes. मैम मतलब 2 person living under the same roof में हाँ जी. उसमें प्रूफ कैसे करेंगे, मतलब कुछ टाइम पीरियड है क्या डेजिग्नेटेड कि आपको इतने टाइम तक दिखाना ही पड़ेगा कि रह रहे हैं? कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम, ऑब्वियसली आप एक रात किसी के साथ रह करके आ जाते हैं और फिर उस पर डीवी लगाना चाहते हैं, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. So sharing household, basically shared household का मतलब है कि you have lived with that particular person over a considerable period of time, whether in present or in past, or you are living अभी right now, जो भी situation है, but you are considerable period time period should be there. But yes, it has not been mentioned anywhere कि कितना time period होना चाहिए. But society at large को ये लगना चाहिए कि yes, you are a family or you share domestic kind of relationship and you are living together, right? Ma'am. Yes. Good evening, ma'am. Good evening. Ma'am, do we need to file a complaint before the women's cell before filing the complaint before the magistrate? No such condition is required here. You can directly go to the magistrate under this section 12 of DVR. You can like yes, before filing it, there are numerous number of things which you need to do. When you come into practice, yes, obviously there are different kind of things, like PCR call is one of the example of that thing, or MLC get done is one of kind of example. So ऐसे ही मतलब आपको पहले से, but going into women's cell is not necessarily important here. Okay, ma'am. But yes, if you want to make your case strong, so you can go. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, I want to ask, like in POSCO case, their fast track trial is being conducted. Is this similar provision for domestic violence acts also? I guess for the disposal of this particular complaint, there may be or there should be any section which describes, but yes, our legal system is again overburdened, so वो follow नहीं होता है. In practical aspects, it doesn't get followed, but yes, हाँ, कुछ ना कुछ time period should be there. Section I am not remembering right now. I'll let you know. Ma'am, like I think fast track trial होता है domestic violence उसमें. Yes. No, it's just होता है. He is asking about the court actually. He is not asking about the time. There is a special court for POSCO. There is a special court for domestic violence act as well. That is called Mahila courts. Mahila courts. Okay, sir. All cases are listed before the Mahila courts. Okay. Thank you. अच्छा, बिफोर कंक्लूडिंग दैट ना, आप लोग ना 2-3 चीजें इसमें जरूर लिख लो कि वो जरूर है, although all process has been very well defined by Monica, but आप इसमें लिख लो कि when you filed a complaint before the magistrate, सबसे पहले आपको लिखना है नोट डाउन कंप्लेंट. जब आप जाएंगे मजिस्ट्रेट के पास, आप अपनी कंप्लेंट को डिफाइन करेंगे, तो मजिस्ट्रेट ऑन अ वेरी फर्स्ट डे उसके ऊपर मंगाएगा DIR, दैट इज कॉल्ड DIR, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट फ्रॉम प्रोटेक्शन ऑफिसर. ये एक बेसिकली छोटा सा प्रोसेस लिखवा रहा हूँ मैं आपको, बाकी आपको जितना भी है वो डिटेल में से क्लियर हो गया है. DIR के बाद देन आफ्टर सीइंग द DIR, magistrate will issue notices to the respondents. And once the notices has been received by the respondent, they put their appearance, they come before the court and they ask for the time to file reply. And the next date process is arguments on interim applications. And after argument on interim applications, then thereafter complainant's evidence and cross-examination.
thereafter respondent's evidence and his cross examination. Thereafter final arguments, and the judgment will be protection orders. This is a brief summary of entire trial of Domestic Violence Act. ये क्लियर है? इन केस कहीं आप जाते हैं, आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, वहां पे आपको इमीडिएटली एक कंप्लेंट दे दी जाती है कि भाई ये डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट है एंड यू हैव टू गो बिफोर द कोर्ट टुमारो एंड यू हैव टू सी व्हाट इज टू बी डन. तो आप इस प्रोसेस के थ्रू जान सकते हैं कि वो किस स्टेज पे चल रहा है और उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी करके जा सकते हैं. Yes, Simran, you want to ask something? Sir, good evening. Good evening. Sir, cross examination से पहले आपने क्या बोला? Complainant's evidence, examination in chief. Okay, sir. Thank you. डोमेस्टिक वायलेंस में जो एविडेंस होती है वो ऑन पेपर्स जाती है, ऑन ओथ नहीं होती है, मतलब कोर्ट में डायरेक्ट नहीं होती. यू हैव टू फाइल अ रिटन एविडेंस. क्रॉस एग्जामिनेशन कोर्ट में. Sir, who like files 6DR report? DIR, protection officer. Every court has a nominated protection officer. Okay, sir. जब कंप्लेनेंट जाती है फर्स्ट डे कोर्ट में along with हर वक्त जो लॉयर्स हैं उनके साथ, एंड शी अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट, तो वहाँ पे जो रीडर्स होते हैं अदरवाइज दे यूज टू राइट ऑन द वॉल ऑफ द कोर्ट कि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर है इस कोर्ट का और ये नंबर है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट. हर कोर्ट में अपना प्रोटेक्शन ऑफिसर का नंबर कोर्ट के उस पे लिखा होता है. Thank you so much, sir, for enlightening students. Thank you. And any other question by anyone? Any doubt? Any query? Or we can wind up. Pragati? There are more questions in the chat box. Okay, please ask, read them out. What is the process to take domestic violence complaint back? You can simply withdraw it. There is no such process. You have to go appear before the court and you say, I want to withdraw whatever your prayers are there. You need to mention the things why you are withdrawing it, and you can withdraw it simply. Next question is defenses for domestic violence. Sorry, didn't get it. Defenses for domestic violence. It's the question by Susan. So you have to look for the lacunas in the complaint. If you are appearing from the respondent side, obviously, then you have to look out the lacunas they have left behind in their complaint. Like for an example, they have mentioned कि मार पिटाई होती थी, बहुत ज़्यादा इंजरी इन्फ्लिक्ट की गई, डेली मार पिटाई हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं, बट यू आर नॉट कम्युनिकेटिंग विद एनीवन, यू हैव नॉट गेट योरसेल्फ डन एन एमएलसी, तुमने कोई एमएलसी नहीं करवाई, कभी कोई कंप्लेन कहीं पे नहीं फाइल की है, कुछ नहीं किया, तो दीज आर और द डिफेंस की मतलब वेग एलिगेशंस लगा रहे हैं आप कंप्लेन में, यू आर नॉट सपोर्टिंग और कोलैबोरेटिंग दैट पर्टिकुलर एलिगेशंस विद सम प्रूफ, so these are all the defenses in that particular thing. Hope I'm clear. Yes, ma'am. There is a question by Anmol Pandey. How much time does it take to get the relief from the court? Again, that can I answer this question? Please, sir, please. Okay, now how much time does it takes to get the relief from the court? Actually, Anmol, it depends upon the relief that you are claiming before the court. अभी the concept अभी मोनिका मैम ने आपको बताया about the ex parte order, interim relief. See, अब किसी एक लेडी को ये अप्रीहेंशन है कि
अगर उसने कल तक कोर्ट में कंप्लेंट नहीं की तो उसको कल घर से निकाल दिया जाएगा, राइट? तो अब कोर्ट में वो जाके अगले दिन कंप्लेंट कर देती है एंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे वो कोर्ट में अपना डिफेंस या अपना केस ऐसे प्रेजेंट करती है कि सर अगर मुझे आज रिलीफ नहीं मिला तो बाय टुडेज इवनिंग आई विल बी आउट फ्रॉम द हाउस। तो इन दैट सर्कमस्टांसेस कोर्ट को दूसरी पार्टीज को सुनने की जरूरत नहीं है। अगर वो अपना एक ऐसा केस कोर्ट के सामने रखती है जो कि देखने में जेन्युइन लगता है, उसके साथ कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो लगाती है कि दे आर मतलब उन्होंने पहले भी कोई वायलेंस की है या कोई कंप्लेंट की है, तो कोर्ट कैन एनी टाइम पास एन एक्स पार्टी ऑर्डर विदाउट हियरिंग द अदर पार्टी। तो इस केस में आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ कि उसको सेम डे रिलीफ मिल गया। सी उसने कोई रिलीफ ऐसा मांगा कोर्ट में जाके कि सर मुझे मेरे हस्बैंड खर्चा नहीं देते हैं, ठीक है, और उनकी सैलरी 40,000 है या 50,000 है और मुझे खर्चा चाहिए पर मंथ का 25,000 का, हाफ ऑफ दी सैलरी। अब ऐसे केसेस में कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट आप बिना दूसरी पार्टी को सुने भी आपने तो 50,000 लिख दिया अपनी कंप्लेंट में, लेकिन कोर्ट को तो नहीं पता ना कि वो रियल में 15,000 है या 50,000 है। तो कोर्ट क्या बोलेगी कि आप नेक्स्ट डेट पे आओ, आई एम इशूइंग नोटिस, मैं पहले दूसरी पार्टी का जवाब सुनती हूँ, उसको देखती हूँ क्या डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, उसके बाद वो 2-3 डेट्स के बाद एक आपको मेंटेनेंस ऑर्डर पास करके देते हैं। तो इस केस में टाइम लग गया 6 मंथ का, ठीक है। अब थर्ड पोजीशन आती है आपके पास कि सपोज कोई लेडी ये कहती है कि भाई मुझे ना घर से बाहर ना निकाला जाए या मुझे तो घर में राइट चाहिए रहने का। उसके साथ उसने कोई डॉक्यूमेंट लगाया ही नहीं, उसने सिर्फ एक मेंशन कर दी कि ये प्रॉपर्टी मेरे फादर इन लॉ की है। हस्बैंड ने कहा ये फादर इन लॉ की नहीं है, ये किसी और हमारे रिलेटिव की है। अब उनके उस केस में क्या होगा? उस केस में पूरा ट्रायल चलेगा, एविडेंसेस होंगे दोनों पार्टीज से, और वो फिर लास्ट में डिसाइड होगा, ठीक है ना। तो वो 1.5 years और 1 year 2 years it can take time. So actually it depends upon the relief which you are claiming before the court. If court sees yes there is an urgency and there is a requirement, court can pass an order of restraining order on the very first day. Am I clear? Yes, sir. Thank you so much, sir. Ma'am, one more doubt. Yes. Is the complaint filed to the police station first or directly to the court through the advocate? No. The Act in itself does not provide for any provision before any concerned police station, SHO, SP, anyone. It directly talk about the complaint before magistrate under Section 12. So you have to directly file the complaint. If you want to go through all that thing, then there are different separate legislation in IPC provided for different kind of things. So you can go by that. If you want to go under DV Act, so there is no such provision to file any complaint before any police station or any police officer. Okay, ma'am. In case if a person doesn't know the procedure, if that person goes to the police station and complains, what will be the procedure then? In that particular case, police will not register any FIR. If normal DV, like DV, if you go to the police station and you state that these kind of thing is being happening to me, or so police in that particular, like in my complaint only, I have showed that PCR call has been made. पुलिस कंट्रोल रूम से मतलब कांटेक्ट हुआ और वहाँ पे भी तो वो FIR रजिस्टर कर सकते थे, बट उन्होंने NCR रजिस्टर करी। तो आपके पास रेमेडी क्या बचती है? अगर आपकी कंप्लेंट इतनी स्ट्रांग है कि आपकी FIR हो जाती है, देन इट्स अ डिफरेंट प्रोसीजर ऑल टुगेदर। व्हेन NCR गेट्स रजिस्टर्ड, जहाँ पुलिस वालों को अथॉरिटी ही नहीं है, जस्ट लाइक हर्ट है, नॉर्मल हर्ट है, मारपिटाई हो रही है, आपको फिजिकली नहीं मेंटली अब्यूज किया जा रहा है, तो उसमें आप क्या IPC में कोई सेक्शन है मेंटल अब्यूज के लिए? नहीं है। तो वहाँ पे आपकी NCR जब करती है तो आपके पास रेमेडी बचती है फिर DV एक्ट में, फिर आप DV एक्ट में कंप्लेंट फॉरवर्ड करते हैं। Okay, ma'am. Thank you. Yes, ma'am. Ma'am, but in case of like physical abuse, we have to go to police station first, no? In case of physical abuse, in that case totally we depends, don't. Lakshay. Okay. This is a very tricky kind of question that totally depends upon the person
कि वो किस तरीके से उस लाइक फर्स्ट रिफ्लेक्स क्या आता है आपका, अगर आपके साथ बहुत ही ज्यादा कुछ एक्सट्रीम हो रहा है, मारपिटाई हो रही है, नौबत ये आ गई है कि सर्वर फोड़ दिया, कुछ ऐसा हो गया, राइट, तो उस केस में तो आप ऑब्वियसली पहले पुलिस स्टेशन ही जाते हैं कि हाँ ये चीज, लेकिन इफ इट्स अ नॉर्मल काइंड तो नहीं कहूंगी, बिकॉज इंजरी एंड फिजिकल अब्यूज ओनली, बट यस रेमेडीज तो आपकी हर तरफ ही है। आप पुलिस स्टेशन भी जा सकते हैं, वहां पे अगर पुलिस वालों को लगता है तो दे विल गेट रजिस्टर योर FIR, इफ नॉट देन DV एक्ट में रेमेडी है। Ma'am, what constitute domestic incident report? Like, how is it made? So, whenever you file any complaint before any concerned magistrate, as sir told कि हर कोर्ट में अपने प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होते हैं ऑलरेडी, तो आपका केस उनको मार्क होता है पर्टिकुलरली कि ये केस है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, तो वो जाते हैं घर पे कंप्लेनेंट से पर्सनली मिल करके आते हैं, आस पड़ोस के लोगों से बात करते हैं, जो भी उनको एविडेंस मिलते हैं वो सारी चीजों को करके वो उसको एक रिटन फॉर्म में कंपाइल करके कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज डिटेल डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जिसमें वो लिख करके लाते हैं कि पड़ोसियों को, मतलब अगर ऑब्वियसली घर में कुछ हो रहा है कंफ्लिक्ट, तो आस पड़ोस के लोगों को भी पता चलता है, घर में जो लोग हैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, कंप्लेनेंट जो है उसकी पर्टिकुलरली स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है, फिर वो सारी चीजें पुलिस जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है ही और शी कंपाइल्स दैट एंड प्रेजेंटेड बिफोर द कोर्ट, दैट इज डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट। ओके, then thereafter it's better if we can show them a format. I have a format. Can I show that so that they can? Please sir, please. See, this is the format of domestic violence report, DIR. Name of the aggrieved person, age, present address, so and so, relationship with the person, number of children, details of the children, and what is important is what kind of violence she has faced. So just protection officer has to tick mark these columns. If it is a forceful sexual intercourse, she has to tick here. Forcible using to entertain others, tick here. Verbal abuses, emotional abuses. These are boxes where she has to tick. Then economical violence, non-payment of so and so, then dowry-related harassments. So this is the format of domestic violence report, domestic incident report. Supporting documents, if there is any MLC, doctor's prescription, list of Stridhan, and what kind of orders or what kind of relief you are praying for. Protection order 19, 20, 21. Information received. Counter signed by the protection officer, name, address. You can easily find it on the Google. Whenever you write the format of domestic incident report, you will find it. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. So, Pragati, I think we can wind the session for now. Yes, ma'am. Okay. If you have any other queries related to this session, you can mail it to us and we will revert to the queries. So thank you, Monica ma'am, for the wonderful and informative session. Thank you for your time and patience, interns. The information related to your next session will be conveyed to you via WhatsApp group. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, everyone. Thank you, sir.